Yes. So in the last lecture, we already studied about the magnetic effect of electric current. So in that chapter, we have seen large number of formulae for different magnetic inductions due to different shapes, different currents, and even we have already seen the formulae for the force acting and the torque acting on the coil. Okay, so let us continue the same. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमको थोड़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करना है. यस, लेट्स टॉक अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. अभी हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा है कि whenever loop, current carrying loop is kept in a magnetic field, it always experiences a force or torque. Okay, and this torque is actually given by the formula NIBA into sine theta, where NIA can be written to be the magnetic dipole moment of that loop or coil, and the torque acting on this coil will be given by the formula M bar cross B bar. ये फॉर्मूला हमको मिलता है M bar cross B bar. ठीक है, अभी सेम वैसे जैसे हमने यहाँ पे टॉर्क ढूंढ के निकाला, तो वैसे हम यहाँ पे वर्क डन भी ढूंढ के निकाल सकते हैं. Just talk about the work done. So if suppose we have the same situation of this type, yes, okay, so this is all about the situation in which we can just see the coil which is kept in a magnetic field in this way. तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल रखा हुआ है इस तरह से. ओके, तो अभी इस कॉइल को हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है तो वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. देखो, एक सिंपल सी बात हमको समझनी है कि द बिहेवियर ऑफ दिस कॉइल एक्चुअली will be similar to the behavior of a magnet. Okay, of the magnetic induction, magnetic dipole moment m bar. Okay, अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने यहाँ पे रखा है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m bar है. ठीक है, सो कंसिडर अ मैग्नेट which is kept here inside this just wait. और ठीक है, ओके, तो सपोज ये एक मैग्नेट है जो हमने यहाँ पे जाके लाके रख दिया सपोज. ठीक है, एंड सपोज दिस मैग्नेट इज केप्ट इन दिस सेम डायरेक्शन, मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में अगर है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में है अगर है, ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया. So the magnetic moment of the magnet is going to be directed in the same direction like this as that of the magnetic field. So in this case, the magnetic moment or magnetic ये जो है magnet
will not experience any torque in this position here. The same thing happens in this case also, in the case of coil also. So the only the thing is that the coil is going to be perpendicular to this magnetic dipole moment. So therefore, whenever the direction of magnetic dipole moment, that is capital M bar, is going to be perpendicular parallel to the magnetic field, the torque will be zero, no doubt. But if suppose we want to turn, अगर ये magnetic dipole moment जो है वो अगर हम turn करना चाहते हैं इस तरह से, if you just want to turn this magnetic dipole moment like this, तो अगर इसको हम इस तरह से turn करते हैं, तो इस process में, in this process of turning, we can just say that some work will have to be done, and in order to turn this magnetic dipole moment, yes, suppose इस तरह से अगर इसको हमने turn कर दिया, तो इस process के अंदर कुछ ना कुछ work done हमको करना पड़ेगा, and that work done will actually be by the formula, that is, अगर ये एंगल थीटा है नॉर्मल पैरेलल पोजीशन से, तो हमको ये वर्क डन हमको मिल जाएगा आराम से. इट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला m into b into cos theta. Actually it will be m into b into 1 minus cos theta. इसमें हमको ये बात समझनी है कि whenever the work whenever the coil is or magnetic moment is turned in this direction here, so it is going to be opposite to the torque acting on it. The torque is trying to bring it up to the mean position. तो मतलब इस पोजीशन में, पैरेलल पोजीशन में उसको लाने के लिए टॉर्क काम कर रहा है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर उसको लेके जाएंगे तो टॉर्क के अगेंस्ट वर्क होगा, और इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा. तो ये बात याद रखो ठीक से. दिस वर्क डन विल बी एक्चुअली गिवन बाय minus mb into 1 minus cos theta. At the same time, if you just want to find out the potential energy, so this work done will just get stored in the form of potential energy, and that potential energy will be actually mb 1 minus cos theta. Remember correctly. So whenever the dipole is turned, suppose 2 मिनट में ये हम suppose dipole जो है, okay, suppose this is the magnet which is kept inside this magnetic field, and suppose initially it is parallel to the magnetic field. तो अभी initial position उसका कैसा है देखो, it is parallel to the magnetic field like this. Okay, but if suppose we turn it from this position to this theta angle position, तो यहाँ से अगर इसको हम इस तरह से turn कर देते हैं, तो देखो अभी उसका जो position है, तो वो हम बोलेंगे it is making an angle of theta degree with this magnetic field. करेक्ट है. तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एक्चुअली अभी यहाँ पे थीटा इतना एंगल कर रहा है. तो अगर हमने इसको इस तरह से थीटा इतना एंगल करने तक अगर इसको रोटेट किया इस तरह से, तो ऐसे पोजीशन में, ऐसे हालत में कुछ ना कुछ वर्क डन हो जाता है. दिस वर्क डन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. रिमेंबर. ओके, बट नाउ वी हैव टू कंसीडर द सेम सिचुएशन बट स्लाइटली इन अ डिफरेंट फॉर्म. तो अभी यहाँ पे हमको सेम सिचुएशन कंसिडर करना है, लेकिन अभी थोड़ा अलग तरीके से उसको हमको देखना है. ठीक है, देखो अभी यहाँ पे ठीक से. तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि whenever this magnet is just turned so some work is done.
Okay, so suppose that there is again another magnetic field, and suppose that there is a magnet which is kept here in this magnetic field, but now it is just kept vertically like this. ठीक है, अभी पहले वो already vertically रखा हुआ है इस तरह से. ठीक है, it is kept with its magnetic moment which is perpendicular to the magnetic field already. तो अभी यहाँ पे ये इसका जो magnetic moment है वो already इस magnetic field को perpendicular होगा. ठीक है, so this is the direction of m bar, we can say m bar, and magnetic induction is given by b bar, which is horizontal. Whereas in the initial case, the magnetic induction and magnetic moment were parallel initially, and then the magnet has turned through an angle theta in this way. But now in this case, the magnet is already making an angle 90 degree already initially, but now we have to turn this magnet from this position to this theta angle position now. तो अगर इस मैग्नेट को हम अगर टर्न करते जाएंगे यहाँ से इस पोजीशन से इधर तक, सपोज ऐसे हमने इसको टर्न कर दिया. ठीक है, जिसमें वो अभी इसमें अभी सपोज वो एंगल कर रहा है थीटा, इतना एंगल कर रहा है इस मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ. ठीक है, अभी इस मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ उसका जो एंगल बना हुआ है तो वो थीटा है सपोज. ठीक है, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नाउ is going to be in this direction here, okay, which is making an angle of theta with the magnetic induction. Yes, so in this position the work will be done by the torque acting on this magnet, because this magnet is going to turn in the same direction as that of the torque acting on it, and that's why this torque will do some positive work. So therefore the work done in this case will be given by the formula mb into cos theta simply. तो ये हमको मिलेगा वर्क डन का फॉर्मूला. बट इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी लॉस्ट एक्चुअली. सो देयरफॉर द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो उसका पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा दैट कैन बी एक्चुअली फाउंड आउट बाय माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा. सो दीज आर द टू फॉर्मूले, यू हैव टू रिमेंबर दिस करेक्टली. तो इन एनी वन ऑफ दिस केसेस द वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी आर जस्ट ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर. ये तो हम समझ सकते हैं आराम से. दोनों केसेस में वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हुआ करते हैं. जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एम बी कॉस थीटा है और यहाँ पे माइनस एम बी कॉस थीटा है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्क डन इज ऑलरेडी नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. बट हियर द पोटेंशियल एनर्जी एटलीस्ट इज पॉजिटिव. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर अ कॉइल ऑल्सो. ओनली द डिफरेंस इज, द सिंपल थिंग इज दैट the coil has to be perpendicular to this magnetic dipole moment. तो जब ये coil ऐसा होगा, मतलब अभी देखो सपोज यहाँ पे जैसा हम देखेंगे, तो जब ये magnetic dipole moment यहाँ पे horizontal होगा initially, तो उस समय coil कैसा होगा? Coil can be considered to be like this, okay? But when this magnetic dipole moment is turned through an angle theta here, we can just say that the coil has been turned through an angle theta and becomes like this, okay? तो coil जो है वो ऐसा बन जाएगा. ठीक है, जिसका नॉर्मल यहाँ पे थीटा एंगल कर रहा होगा. ठीक है, इनिशियली द कॉइल का नॉर्मल विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, बट आफ्टरवर्ड्स द नॉर्मल ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड हियर इन दिस केस व्हेन द कॉइल वाज परपेंडिकुलर, मतलब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट जब ऐसा था तो उस समय कॉइल कैसा रहा होगा? जरूर इस तरह से रहा होगा. Forget about the rectangular, or it may be rectangular, it may be circular also. तो अगर रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, ओके, व्हिच विल बी, इट्स प्लेन विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस इट्स मोमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस. दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल. बट फाइनल पोजीशन, तो फाइनली कॉइल कैसा बनेगा तो हम देख सकते हैं. सपोज दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल. द फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइल, which will be denoted by red color rectangle here, will be like this. So this is going to be actually the final position of the coil, okay, जिसका परपेंडिकुलर ये हमको मिलने वाला है इस तरह से. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि द कॉइल का जो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल का बना हुआ एंगल जो है वो हमको मेजर करना है और वो यहाँ पे हमको यूज करना है इस फॉर्मूला में, जिससे हमको ये सब जो रिजल्ट्स है वो करेक्ट मिल जाएंगे आराम से. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी.
when the coil is or magnetic dipole moment or the loop, rectangular loop, is just turned in the magnetic field. Yes. Now you have already seen the just wait. Yes, so let us see the next topic in the chapter, that is about the moving coil galvanometer. So suppose there is a horseshoe magnet pole piece like this. Consisting of north pole, south pole, and there is a soft iron core which is kept in between these two pole pieces, and there is a long pointer which is attached to this coil here in this way, and a wire wire is just wound on this soft iron core, like this. Wire of large number of loops or turns is just wound on this here, and the a scale is marked here. तो यहाँ से वो 0 से start होता है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अप टू लास्ट डिजिट तक वो जाता है. तो इस तरह से ये स्केल मार्क किया हुआ रहता है यहाँ पे. ठीक है, अप टू द लास्ट वी कैन से 100. ओके, तो अभी इसमें क्या होता है कि जैसे ही करंट फ्लो होता है, अभी इसको अगर हम सपोज यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है, राइट. अगर हम सपोज इसको देखेंगे सामने से तो वो हमको दिखाई देगा इस तरह से, जिसमें ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमको इस तरह से दिखेगा. एंड देयर विल बी अ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल जो कोर है सॉफ्ट आयरन का, तो वो यहाँ पे हमको इस तरह से दिखाई देगा. Yes, and then at the top point here of the cylinder, there will be a pointer, long pointer, which is attached here in this way. And once again, a wire will be wound on this cylinder in this way. So that whenever the current flows through this wire, what happens is the torque acts on every turn. And because of that torque acting, the whole cylinder will just get turned through some angle. And it will experience a torque in this direction to rotate. तो ये जो rotate करने वाला जो torque है, उसको हम बोलेंगे deflecting torque, which is actually given by the formula N into IBA, where NIBA, N is the number of turns, current I, and magnetic induction is B, and area of the coil is A. So this is going to be the deflecting torque actually. But at the same time, since this whole cylinder is connected to some spring here, so this spring actually get twisted whenever this cylinder just get turned. And because of that twisting, some another torque act on this cylinder, which is called as a restoring torque. And that restoring torque is actually proportional to the angle of deflection. And hence the constant of proportionality C अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे वो C into theta, ये हमको formula मिल जाएगा for restoring torque here. And the coil will just stop where the deflecting torque and restoring torque just become equal. तो torque is equal to torque dash जब होगा तो उस समय हमको मिलेगा NIBA, which must be equal to C into theta, जिससे हमको मिल जाता है I
is equal to I मतलब current flowing through this galvanometer, moving coil galvanometer, will actually be equal to C upon NBA into theta. This is actually going to be the formula for finding the current inside this current flowing through the galvanometer. Here, this whole thing is going to be the constant, which depends on the construction factors like number of turns, magnetic induction produced here, and area of the coil, and the twist constant of this spring here. तो इनके सबके ऊपर वो डिपेंड करता है. ये सब जो अगर कांस्टेंट अगर मान लेते हैं तो उसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल is going to be proportional to the angle of deflection here, and this is actually called as the principle of galvanometer. Okay, principle of moving coil galvanometer, which tells us simply that the current flowing through this galvanometer is always directly proportional to the angle of deflection. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. और इसका सेंसिटिविटी और इसका जो एक्यूरेसी है वो भी हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम बात की थी ऑलरेडी. तो सेंसिटिविटी जो है it is defined as d theta by di, which is given by NBA upon C. And accuracy, actually accuracy cannot be measured, but the error can be measured. So error in the measurement of current, that is relative error, which is actually di upon I, which happens to be actually d theta by theta, which means that the accuracy will be more if error is less, and error will be less if theta is more. So that's why we can get the maximum accuracy at maximum value of theta. तो ये हमको समझना है कि accuracy बढ़ाने के लिए हमको theta बढ़ाना पड़ेगा. और sensitivity जो है, sensitivity depends on NBA upon C, where n number of turns, magnetic induction, and area upon twist constant. ये हो गया current sensitivity. In the same way, we can just define the voltage sensitivity also by this d theta by dV, which will actually be NBA upon C into G. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है तो वो करंट सेंसिटिविटी को G से डिवाइड करने से हमको मिल जाता है. This can be called as SI, we can say current sensitivity, and this value is supposed to be SB, which is nothing but voltage sensitivity. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के अंदर एक रिलेशनशिप हमको ये मिलता है. SB मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी happens to be actually current sensitivity upon the resistance of galvanometer itself. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. Okay, so this is all about the galvanometer. Now let us talk about the force acting between two current carrying conductors kept parallel to each other. Okay, so suppose we have the two current carrying conductors which are kept parallel to each other, but let us consider in the first case that the force suppose the in the first case the currents flowing through them are just in same direction, suppose like this. ये दोनों सेम डायरेक्शन में है सपोज. और दूसरे केस में समझो करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है. फर्स्ट वाले में करंट ऊपर तरफ जा रहा है और सेकंड वाले में करंट नीचे की तरफ जा रहा है. इस तरह से ये दो अलग अलग केसेस हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं. ठीक है, तो अभी इसमें देखो, इफ सपोज I1 and I2 are the currents flowing through these two conductors, and these conductors are of length L each. Okay, L इतना लेंथ हर एक का है. तो अगर इसमें ये पे मिल जाएगा कि करंट I1 I2, तो फोर्स एक्टिंग ऑन बिटवीन देम विल बी एक्चुअली गिवन बाय म्यू नॉट इनटू I1 I2 इनटू L अपॉन 2 pi A. ओके, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हमको मिलता है. This is going to be the force acting between two parallel conductors, and if we just want to find out the force per unit length, then we can just be able to get this as capital F upon L, where this L can be transferred into denominator side here, so as to get this here simply mu naught I1 I2 upon 2 pi A in this way. Okay, so this will be actually the formula for force per unit length acting between two parallel conductors. But in this case the two forces will actually be attractive
in case when these two conductors are carrying the currents in the same direction. In the case when the currents are going to be in the opposite directions, the force will be given by the same formula, but the forces will be repulsive. So in this way, we can just say that the opposite, unlike currents, always repel each other, whereas the like currents always attract each other. तो यहाँ पे जो currents अगर same direction में है, तो there will be a force of attraction between them. तो ये बात अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है? Attract होते हैं वो. और अगर ये यहाँ पे जबकि currents opposite directions में है, तो ऐसे हालत में जो force है, वो हमेशा repulsive हुआ करता है. There is a repulsion between these two. Or we can just say the two conductors which are carrying the currents in the opposite direction will always repel each other. Okay, with the same formula for the force. Same formula यहाँ पे हमको force के लिए हमको use करना होगा mu naught I1 I2 into L upon 2 pi A. Remember, and this will be the force per unit length can be also be found out to be equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi A in this way. Okay. Yes. Okay. So we have that this. Okay, so we are finished with the theory here. So let us try some MCQs from this chapter. Okay, so let us see the questions from this. I hope you can see the PDF file containing questions. भी ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो तो मोस्ट प्रोबब्ली इजी है सारे. फिर भी चलो ये ये 9th वाला क्वेश्चन हम कर देंगे फटाफट. Yes, just read the question carefully. Two circular coils of equal radius carrying currents I1 and I2 in the opposite directions are at a large distance d. The distance from the first coil where the resultant magnetic induction is 0 is.
So just consider these coils like this. ओके, तो समझो ये फर्स्ट कॉइल यहाँ पे है और ये सेकेंड कॉइल यहाँ पे, ठीक है. These are the two coils which are at a very large distance, and suppose that they're carrying the current in the opposite directions. Suppose the first coil just carries the current in this clockwise direction, and the second one carries the current in the opposite direction, that is anti-clockwise direction. Okay. So what will happen here is the first coil will just produce a magnetic field at different points around it. तो अब यहाँ पे क्या है ना कि अब ये तुमको पता है कि ये जो कॉइल जो है, तो कॉइल अगर इस डायरेक्शन में अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट अगर फ्लो हो रहा है और इसमें इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो राइट हैंड रूल से दिया जाता है. तो वो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट्स इस डायरेक्शन में होगा. हर एक पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल विल बी इन दिस डायरेक्शन हियर, ठीक है, ड्यू टू दिस फर्स्ट कॉइल हियर. बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द सेकेंड कॉइल हियर, तो सेकेंड कॉइल के बारे में हम बात करेंगे. तो यहाँ पे सेकेंड कॉइल में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो ये दिया हुआ है यहाँ पे. सपोज दैट द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन हियर इन द सेकेंड कॉइल. ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हमको उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ मिलेगा. एट ऑल द पॉइंट्स ड्यू टू दिस कॉइल the magnetic field will be directed in opposite direction like this here. Okay, but the second coil carries the current of I2 here, and the first coil carries the current of I1 here. Okay, so if suppose we consider any particular point here, तो यहाँ पे जो point P है suppose, तो यहाँ पे दो magnetic fields produce होंगे, एक B1 due to I1 and the second will be B2 which is due to this current in I2, current I2 in the second coil here. So here, since these magnetic inductions are already opposite in directions, so we just need to check that these two magnetic inductions must be equal in magnitude. Okay, क्योंकि opposite वो already है, अब यहाँ पे हमको सिर्फ उनको equal बनाना है. अगर वो equal बन गए तो हो गया हमारा काम. That means we want this B1 to be equal to B2 so that the magnetic induction at this point P will become 0. That is we want here. So the resultant magnetic induction will be 0 at a particular point where the both of the magnetic inductions becomes equal in magnitude because already they are opposite in direction. Okay, so अगर हम ये यूज करेंगे तो B1 magnetic induction due to this coil. What is the formula for finding the magnetic induction due to a coil at a point along its axis at a distance x from its center, and if its radius is r here? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी. तो वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे जबकि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि द कॉइल्स एट अ लार्ज डिस्टेंस. ये देखो, ये जो वर्ड है ना लार्ज डिस्टेंस, इससे हमको क्या पता चलता है कि दिस x इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी मच ग्रेटर देन दिस r. तो वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन का, तो वो है सिंपली म्यू नॉट I a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर अपॉन 2 times of r square plus x square the whole raised to 3/2. ये सभी को याद आ रहा है? ओके, दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली फॉर द कॉइल. लेकिन अगर ये शॉर्ट कॉइल है, मतलब इफ दिस r इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल देन x, ओके, तो उस केस में क्या होगा, ये x स्क्वायर यहाँ पे बचा रहेगा. दिस r square plus x square can be neglected and just replaced by x square only, and we have the modification of this formula, that is mu naught into I into r square upon, sorry, हाँ, इसका जो मॉडिफिकेशन है तो वो हमको मिलेगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन, सिंपली वी कैन जस्ट गेट इट एज x रेज टू 3, मतलब x क्यूब ओनली. तो ये x क्यूब, इस तरह से हमको ये मिल जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, or even we can just use the one more approximation also, that is mu naught upon 4 pi
इंटू 2m अपॉन x क्यूब, ये भी एक उसका ही अप्रोक्सीमेशन है। 2m, m stands for NIA, where n is the number of turns, I is the current and A is the area of the coil। तो उस एरिया के अंदर ये r स्क्वायर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एंड इट कैन बी प्रूव्ड इफ बाय मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 पाई हियर इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हम इससे ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। बट चलो ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो भी हमको आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। तो अभी देखो b1 के बदले क्या रखने वाला हमको, तो म्यू नॉट इंटू आई, मतलब करंट विच इज करंट I1 हियर, इंटू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने भी आया कि इक्वल रेडियस, राइट। इक्वल रेडियस होने की वजह से यहाँ पे हमको R1 R2 बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम आर स्क्वायर ही बोल सकते हैं। एंड इन फैक्ट आफ्टर ऑल दिस आर स्क्वायर विल जस्ट गेट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, ओके। तो ये यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया एंड इसको हमको डिवाइड करना है एक्स क्यूब से, जो कि अभी यहाँ पे इधर से जो डिस्टेंस उसका है उसको अगर हमने मान लिया x सपोज, तो यहाँ से x होने से वो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही फॉर्मूला हमने अगर सेकेंड कॉइल के लिए अगर अप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर कॉइल कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू d minus x, just because the total distance between the two coils is given to be d here, okay। जो डिस्टेंस है इन दोनों कॉइल्स के बीच में का वो एक्चुअली d देके रखा है। सो वी कैन जस्ट शो दिस डिस्टेंस हियर and this is actually going to be the distance d which is there in between these two coils, right। so therefore ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस d होने की वजह से क्या होगा कि अगर ये लेफ्ट साइड वाला p के लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस अगर हमने x मान लिया तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो d minus x बन जाएगा ऑटोमेटिकली, करेक्ट। so therefore we can just apply the same formula once again and get this as mu naught into I2 this time into r square upon the remaining distance का स्क्वायर, जो कि हमारे पास है d minus x एंड उसका स्क्वायर, करेक्ट है। सो दैट सॉरी क्यूब, yes, and then we can just be able to cancel out this mu naught and r square from both sides and we'll be left with simply I1 upon I2 to be simply equal to what, x cube upon d minus का whole cube, correct है। but since we want to value of x here, we'll just take this cube root on both sides, okay। तो अगर दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो ये I1 अपॉन I2 का रेस टू 1/3 बन जाएगा। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, रेस, अच्छा ये स्मॉल I1 स्मॉल I2 दिया हुआ है, सो लेट अस यूज दैट ओनली। सो हियर इट विल बी स्मॉल I1 एंड अपॉन स्मॉल I2, लेकिन उसका ब्रैकेट का रेस टू 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट है, जो कि यहाँ पे x अपॉन d माइनस एक्स आ जाएगा सिंपली। और अगर हमको इसमें से x ढूंढ के निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको अगर हमने सपोज ये I1 अपॉन I2 द होल क्यूब को 1 बाय रेस टू 1/3 को अगर हमने सपोज m बोल दिया जस्ट फॉर, या k बोल दिया सपोज जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि k is going to be equal to x upon d minus x, right। so if we just cross multiply it here, then we can be able to get this as k into d minus k into x, which is going to be x here, so that if we just transfer this k into x in that side, then we can be able to get this k into d is going to be equal to k into x plus simply x, so that we can just take x common from these two terms and get k into d is equal to k plus 1 into x, right। so that x can be actually found out to be simply equal to k upon k 1 plus k into x, right, sorry d, right। and if we just don't want to express this k here in numerator and denominator at 2 times, so then we can just divide it by k। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर हमने k से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा सिंपली x is going to be equal to k upon k, ठीक है, k से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 upon k,
plus again k upon k, and this whole thing is to be multiplied with d as a final, so that this k gets cancelled. And we'll be just left with this x to be finally equal to 1 upon 1 plus 1 upon k, the whole thing multiplied with d here. But what is k? Just don't forget that it is going to be I1 upon I2 the whole raised to 1 by 3, right? So since there is 1 upon k appears here, so we can just put reciprocal of k in this formula here, so that we can get it as 1 plus 1 upon k. अभी 1 upon k का मतलब हो गया I2 upon I1 the whole raised to 1 by 3, and that is then whole thing multiplied by d, which is already available there in this option 3 here, which must be the correct one. Okay, so this way we have got this option 3 as a correct option here. Okay, so let us continue this MCQs in the next lecture tomorrow. Okay, thank you all of you. Let us stop here.